Good evening, everybody. I am Saroj Samal. I do take classes of Sociology Optional, Social Issues, English Essay, Ethics, that is GS paper 4. In addition to this, I also conduct interview for IS as well as OAS examination. I welcome you all to this YouTube session of VANIKIAS. Today, I will be taking two classes related to GS paper 4, that is ethics. In the first session, I will be discussing the fundamental difference between three important concepts which are frequently used in GS paper 4, that is ethics, integrity and aptitude. So, what are the three concepts that I would be making a comparison and contrast? These three concepts are sympathy, empathy and compassion. What our civil service aspirants are expected to learn, and after becoming civil servant, you people are expected to apply these three concepts, that is sympathy, empathy as well as compassion in matter of administration. So, in the first session I will be discussing these three concepts, and in the second session I will be basically discussing the different types of questions that have been asked over the last 10 years in IS written examination, particularly in context of GS paper 4. पिला माने प्रथम क्लास रे मो सिंपैथी, एम्पैथी आउ कंपैशन विषय भितर थिबा तफात कौन ताको बुझेबी, सिमिलारिटी कौन अच्छी बुझेबी एवं प्रथम क्लास सरला परे मु 2 मिनिट रो ब्रेक देबी. 2 मिनिट रो ब्रेक परे सेकेंड सेशन आमे आरंभ करिबा. सेकेंड सेशन ता होची बहुत इंपोर्टेंट, कारण ओएस परीक्षा रे फर्स्ट टाइम पाई एथिक्स पेपर, दैट इज जीएस पेपर 4 इंट्रोड्यूस हेची. तेनु आज पर्यंत ओपीएससी कोनोसी एग्जाम एथिक्स पेपर उपरे करी नाही. सो कीपिंग इन माइंड हाउ UPSC has asked question over the last 10 years, कारण 10 वर्ष है UPSC एथिक्स पेपर उपर क्वेश्चन करुच्ची. 2013 मसीह आरंभ होता, गत वर्ष 2022 मसीहा जाइए. तेणु आ भितर 10 वर्ष है UPSC क्वेश्चन सेट करुच्ची एथिक्स पेपर उपर. तेणु गत 10 वर्षर UPSC रो क्वेश्चन ट्रेंड कौन तापर डिस्कसन करी एवं सब केते प्रकार रो क्वेश्चन आसुची एथिक्स पेपर रे से विषय रे एक डिटेल डिस्कसन करी. ता सहित केस स्टडी, गत वर्षर केस स्टडी यूपीएससी रे जहाँ पड़ी ताकू मध्य मु सॉल्व करके आंसर आपण मानक देबी. देन लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज sympathy, empathy and compassion. Sympathy, empathy and compassion. Sympathy, empathy and compassion. पिला माने sympathy, empathy और compassion विषय डिस्कशन करिबा पूर्वरो first I want to cite an example. So let us start from an example, then we would come to the three concepts and I will make you clearly understand between the distinction, between the difference in all the three concepts. For example, mo kahuchi, let's start from an example. Suppose you are working as an IAS officer. I am using both the medium English as well as Hindi in matter of making you understand the topic. Suppose you are working as an IAS officer somewhere in Odisha. One day you went to a restaurant
to have your lunch or your dinner, then you notice the fact that in that restaurant there was a person, there was a child in fact whose age was below 14 years of age. He was serving there. देख पिला माने ओडिया रे कहूची तमे आईएएस ऑफिसर हिसाब रे ओडिशा रो कोनोसी गोटे जगह रे काम करूछ, दिने तमे गोटे रेस्टोरेंट को गल, रेस्टोरेंट रे जाई के देखिलो खाया पे बसीच, देखिलो गोटे पिलाटी तुमको सर्व करूची जार बयस 14 वर्ष रु कम। ऑब्वियसली 14 वर्ष रु कम पिला माने जो माने गेनफुल एम्प्लॉयमेंट रे एंगेज हुअंती तांको चाइल्ड लेबर कहा जाए। सो यू नोटिस ए चाइल्ड लेबर सर्विंग यू different items that you have given order in the restaurant. देखिला परे you developed a feeling, you felt very sorry, you felt pain after observing the fact that a child labor was serving you the food. Second stage को आस, वर्तमान तमे कंपेयर करूच, तमे चिंता करछ अरे ये पिलारो फ्यूचर कौन, ये तो ये 14 वर्ष रो कम रेस्टोरेंट रे आसिकी फूड सर्व करूची, आर फ्यूचर कौन, मु जदि आ जगह थांती मोर कौन फीलिंग आसंता। तापरे पिलाटी के डाकिल, तमे खाई सारल, पिलाटी के डाकिल, ता ना कौन पचारल, घर कोठी पचारल, ये सब कथा गला। तापरे पिला को तमे पचारछ तू बड़ हेले कौन करिवो, पिला को पचारुछ। हेतु सी कहूची बड़ हेले मु गोटे ढाबा खोलिबी। की ढाबा खोलिबो ना मु गोटे टी ढाबा खोलिबी, टी ढाबा, चा ढाबा खोलिबी। काहे खोलिबो, से कहला चा ढाबा खोलिले बहुत रोजगार हब, मु एबे सिना रेस्टोरेंट रे काम करची, मु निजे मालिक हेबी, चा ढाबा खोलिबी। ता पाखरु सब कथा सुनिल, तापरे चिंता कल ये पिलाटा एठी रहिले तार फ्यूचर स्पॉइल्ड हो जिवो। जदिओ से फ्यूचर को लेकिन बहुत स्वप्न देखुची, तमे बुझीगल जे चा बिकुथिबा सबु पिला भविष्यत रे देशर प्रधानमंत्री हो पारिबे नाही। पिला माने बुझुच, तम भीतर ये फीलिंग आसिला चा बिकुथिया सबु पिला देशर प्रधानमंत्री हो पारिबे नाही बा वेस्ट बेंगल मुख्यमंत्री हो पारिबे नाही। काहे कहूची जानुथिबो, तापरे तमे कौन कल, से पिलाटी की तम सांगरे बसैल, तम गाड़ी रे बसैल, तमे तो कलेक्टर अछ बा सब कलेक्टर अछ, वर्तमान गोटे भल एनजीओ तम शहर रे अच्छी, तमे जानिच से एनजीओ रे पिलाटी की नहीं के पहुँचे दल। से एनजीओ रो काम हला से माने चाइल्ड लेबर को थैथान करांती, तांको पाठ पढ़ाती, तांको एजुकेशनल कैरियर पाथ रे आगे नियंती। एटी स्टोरी सरीगला, एग्जाम्पल सरीगला, बट राइट नाउ कम बैक टू 3 concepts that I will be discussing. First concept is, I told you, that is sympathy. Second is empathy. Third is compassion. Sympathy means the feeling of sorry, feeling sorry for somebody suffering. जने असुविधा अच्छी, ठीक रास्ता रे जाऊनी, ताकू देखिला परे तम भितरे जो फीलिंग आसे, दैट इज कॉल्ड सिंपाथी। पिलाटीर बयस 14 वर्ष रु कम, ताकू देखिल रेस्टोरेंट रे सर्व करूची, यू डेवलप्ड ए फीलिंग ऑफ sorry, and the moment this feeling came to your mind, the moment you came to understand this thing,
the sorry state of affairs associated with the child, this is called sympathy. जड़े असुविधारे पड़िथिले ताकू देखिले आम भितर को जोटा आसे दैट इज कॉल्ड sympathy. So able to understand others problem, that is called sympathy. Sympathy comes at cognition level. Cognition अर्थ पिला माने होची thought, cognition अर्थ होची thought. Sympathy comes at cognition level, that is cognitive aspect. देखा cognition spelling एठी अछि, cognitive हेची, cognition रु cognitive हेची, cognition spelling लिखि दउछि आउ थरे cognition COGNITION. Sympathy comes at cognition, thought level ले जहाँ आसे that is called cognition. तेनो चाइल्ड लेबर टी को देखिलो ताकू देखिला परे तुमको दुख लगिला, this is called sympathy. Then comes the next concept, that is empathy. What is empathy? Putting yourself imaginatively in the condition of other. पिला माने लिखि दियो, putting yourself imaginatively in the condition of other and developing the same feeling that the other person feels. Developing the same feeling that the other person feels. पिला माने तमे चिंता करूछ फॉर्चुनेटली मु छोट बळे गोटे भल परिवार रे जन्म हेथिली, सेथि पई मोर बापा माँ मोर बहुत केयर नै चंती, चाइल्ड लेबर मु हेई नाही, दैट्स द रीजन टुडे आई हैव बिकम कलेक्टर. Had I been born and brought up in the family in which this child labor was born and brought up, I could not have become collector. So feeling others. So what is empathy? Empathy means I feel your feel. I feel your feel. जड़े दुखरे अच्छी, जड़े असुविधारे अच्छी, ता प्रति सदय होबा, expressing concern for him, that is called sympathy. Sympathy टा cognitive aspect, चिंता लेवल ले हुए, किंतु empathy होची कौन? Emotive aspect, emotion तम भीतर काम करे empathy की जानिया पई. How? Somebody is in trouble, I not only understand his problem, I also feel his problem or her, I feel also his feeling or her feeling. This is called empathy. पिला माने बुझी पारुछ empathy? So Sri Sangeeta, okay, good evening. So feel other feeling is called empathy. तापरे ताठारु हायर लेवल ले आसीबो compassion. What is compassion? You feel other feeling. In addition to that, you take some concrete step how to help the person so that his suffering would be mitigated. पिला माने बुझी पारला तीनटा भितर डिफरेंस. तेनो एठी मो टेबुल ले लिखि देछि सिंपैथी रो अर्थ फीलिंग सरो, feeling sorrow for others misfortune. ओके ठीक अछि. feeling sorrow for others misfortune, अन्यर असुविधा देखि कि दुखी हबाटा होछि sympathy. Empathy means putting oneself imaginatively in others condition. मु कहिली बुझाई देली, मु जदी ए मो परिवार रे जन्म न है कि ए पिलाटीर परिवार रे जन्म ही थांती ताहले मु आईएस हेई पारि न थांती. तेनो you are able to emotionally get connected with the person whose sorrow you are evaluating, you are assessing. This is called empathy. Empathy ठारू आउरी higher level ले रहइबा कोन? That is compassion. Compassion ने अन्यर दुख को बुझी पारिलो
अन्यर दुख को फील करि पारलो एवं अन्यर दुख केमिति कमिबो सेथिपाई तमे आगबर है कि किछि काम कल। फॉर एग्जांपल मु कहली चाइल्ड लेबर को नहीं कि गोटे एनजीओ रे रखे दबा एवं तार पाठपढ़ा विषय बुझीबा, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। तेनो जदि गोटे कंपैरेटिव स्केल करिबा, गोटे लैडर आमे तैयारी करिबा, लैडर गोटे सीढ़ी जदि तैयारी करिबा, सीढ़ी रे सबुठ तले आसीबो सिंपाथी, ता ऊपर को आसीबो एम्पाथी, आउ सबुठु ऊपर आसीबो कोटा ना होची कंपैशन। If we make a comparison among the three concepts, then at the base stands sympathy, above sympathy stands empathy, and at the top stands compassion. Then first point of difference is clear for everybody. Right now come to second point of difference. Sympathy means it works at cognitive level, thought process, sympathy. Empathy means both cognitive and emotional, खाली चिंता करछो से कथा में you are expressing your emotion. तेनो sympathy टारू higher value होची empathy. Then comes what your compassion ने cognitive होची, thought इमोशन होची, ता संगे आउ गोटे जिनस जोड़ा होची एठी एक्शन। तेनो कॉग्निशन इमोशन प्लस एक्शन, कॉग्निशन माने थॉट, तेनो थॉट संगे इमोशन रहिबो, ता संगे लोकटा को हेल्प करिबा, पिलाटी को हेल्प करिबा केमिति फ्यूचर रे से आगे पारिबो, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। देन थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द थ्री कॉन्सेप्ट्स दैट आई वुड बी डिस्कसिंग। देखो सिंपैथीटा सब बळे नेगेटिव सिचुएशन ने आसे, जने असुविधारे पड़ी आमे ता असुविधा को देखिकी दुखित होचंती, व्यथित होचंती, मर्माहत होचंती, दिस इज कॉल्ड सिंपैथी। सो सिंपैथी इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिव सिचुएशन, सो सिंपैथी हैज ए नेगेटिव कनोटेशन। बट एम्पैथी कहली आई फील योर फील, एम्पैथी आसीबो पॉजिटिव रे आसीबो, नेगेटिव रे आसीबो। जणे असुविधा रे पड़ीची, ता असुविधा को देखि आमे दुखित हेले, एवं खाली दुखित हेले से कथा नुहे, आमे इमोशनली कनेक्टेड ता संगे रही गले, ता दुखटा भी हमको दुख रियली देला, वी आर एबल टू फील हिज और हर फीलिंग, दिस इज नेगेटिव सिचुएशन नहला। बट पॉजिटिव, व्हाट इज पॉजिटिव? तमे आईएएस परीक्षा दौच, ओएस परीक्षा दौच, ओएस रो रिजल्ट बाहरला, आईएएस रो रिजल्ट बाहरला, तमे टॉपर हेच, तमर जी रियल फ्रेंड, जेन्युइन फ्रेंड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, तमे जो दिन आईएएस टॉपर हे जीवो से न सी फील करिवो सी जेमिति आईएएस हे जाईची, त माने तम सुख रे भी सी इमोशनली कनेक्टेड हे पड़ची, तम दुख रे हे पड़ची। सो एम्पैथी इज कनेक्टेड विथ both positive and negative situation, but sympathy is connected only with negative situation. Then comes compassion टा भी सेमिति नेगेटिव रे हुए, पॉजिटिव नुहे, कारण जने असुविधा रे पड़ीची बोली कि तमे ताको हेल्प करूछ, एक्शन ओरिएंटेशन टा बेसी थाए कोठी कंपैशन रे, एम्पैथी रे एक्शन ओरिएंटेशन न थाए। देन कम टू नेक्स्ट सिंपैथी रो एग्जांपल मु देछि, आई केयर फॉर योर सफरिंग, दैट इज सिंपैथी। एम्पैथी रो एग्जांपल, आई फील योर फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सफरिंग, आई फील योर हैप्पीनेस और सफरिंग, दैट इज एम्पैथी। कंपैशन, आई एम डूइंग समथिंग टू रिड्यूस योर पेन, कहली कंपैशन रे एक्शन ओरिएंटेशन रहुची, खाली फील आमे करू नाहंती, तमे कलेक्टर हिसाब रे से चाइल्ड लेबर टार केमिति आउ से चाइल्ड लेबर है कि रहीबनी, आगु केमिति से भलो कैरियर करिवो, जेतोले तमे किछि कंक्रीट स्टेप नौच, एक्शन नौच, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। देन कम टू लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इन केस ऑफ सिंपैथी नो एक्शन, खाली आमे ता दुखरे दुखी हे गले एवं भलो कथा कहिले सेटा, एम्पैथी रे भी सेमिति दुखी हे गले बा सुखी हे गले, किंतु
compassion कहले we are taking concrete action, we are taking concrete action how to reduce his suffering, his pain. All of you got the clear cut distinction between sympathy, empathy and compassion? All of you are clear? With this much discussion, the first class is over. So, just I am giving you 2-minute break to start the second session, and second session is really very crucial session where I will be discussing the different types of questions that have been asked by UPSC over the last 10 years. In addition to that, I would also discuss the answer of the question related to a case study that has been asked by UPSC in 2022. Just have a break for 1 minute. Thank you.